अमित फाइन है। ओके कार्तिक, तो आज हम डिस्कस करेंगे यस। कि एआई और चैट जीपीटी का कितना रोल है हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में, हमारी लर्निंग में, हमारी टीचिंग में। बस नवडेज तो फुल एंड फुल यही है। एआई से का रोल बढ़ता ही जा रहा है। यस। तो आज हम देखते हैं कि हमारे हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का नॉलेज एआई और चैट जीपीटी के पास कितना है ओके, टेक्निकल क्वेश्चंस ना। क्वेश्चंस के लिए, और इसके साथ साथ हम भी उसको कितना सिखा सकते हैं। बस। ओके। ओके, ओके, बस हम भी यही को सिखा सकते। सिखा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन यस, पुट अप किया रेट काउंट से क्वेश्चन। रिलेटेड, कि रेट काउंट अगर 40 है हम्म। और 2 एंड्स पर डेंट है, हम्म। तो ईपीआई कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो अगेन बस ए जीपीटी ने फार्मूला दिए है, ओके देन कैलकुलेट भी किए, देन ओके आंसर भी गिवन है, ईपीआई इज इक्वल टू 80। 80, बट दिस इज टोटली इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ओके गिवन बाय ओके। चैट जीपीटी। सो कहते हैं आई रिप्लाइड रॉन्ग आंसर, ओके, कैन आई टीच यू। बस यही तो। ऑलवेज। ऑलवेज वेलकम टू लर्निंग। ओके। तो कहते हैं देन चैट जीपीटी रिप्लाइड कि लेट्स टीच गो स्टेप बाय स्टेप। ओके। सो सिंपली आई कहते हैं रिप्लाइड ईपीआई इज इक्वल रीड काउंट डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एंड्स पर डेंट ओके, then AAE was calculated, कैलकुलेटेड एंड then फॉर्मूला इज गिवन okay, then करेक्ट applicable, then EPI was given, EPI is equal to 40. 40 एंड दिस इज करेक्ट आंसर। Yes. ओके। सो then AI replied ki let's give some another another question. another one question. Okay, so I replied now calculate read count for EPI if read count is 60 and 60. denting order is 2 ends per dent. Okay, ठीक है। according to the learned, AAE was learned, Okay, then according to that formula EPI is equal to 60. 60 and 60 is again right answer. Hmm. So here कहते हैं ChatGPT goes the right way to answer and how to calculate EPI Yes. by using read count and Yes, denting order. yes, yes, Or yes. this is also for our students कि they Yes. also use correct way to Then calculate EPI. okay. Thank you Karthik Thank you. and all.